I don't know why when they wash it, wiper niche nahi karte. Well, that's Azad, but not taking Azad today because I have another beast to check out. I barely have 24 hours with it, but hey, I'm gonna make the most of it. Gonna ride to work and show you what it is. Ta-da! This big bad beast is the Isuzu MUX. This is a 2018 version, and oh my god, it's huge. Please don't think that's what she said in your head. And mazedar cheese, which I'm not going to be able to check out, is 4x4. So Isuzu calls it as the ultimate blend between what your heart desires. I'm used to a high ingress and egress because of the Thar. Isuzu calls this as the ultimate combination of what your heart desires, which in terms of off-roading and just mad adventure is, and what the family wants. Looks like it, right? It's a very capable 7-seater, massive cabin, over 4.5 meters, and apparently all the creature comforts that one needs in a car that costs about 30 lakh rupees in this segment. Is that true? I'm going to find out as I drive to work. I really wish there was a sunroof. Come on. इससे सस्ती गाड़ियों में sunroof आ जाते हैं, Isuzu. But you know, that is actually symptomatic or indicative of what, in a nutshell, the Isuzu MUX is. The MUX is actually an upgrade to the MU7. And इसमें styling के लिहाज से and power tuning के हिसाब से थोड़े से changes किए गए हैं. Nothing major. And I think it is a reliable, tried and tested Isuzu formula, focusing largely on engine and brute raw performance. अगर आपको goodies चाहिए, creature comforts चाहिए, थोड़े और gadgets चाहिए, gizmos चाहिए, features चाहिए, then of course you'll have to spend extra couple of lakh rupees. या फिर अगर आप top end version देख रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा. अगर आप कंपटीशन देखते हैं, which is the Ford Endeavour and the Toyota Fortuner, that is obviously kitted with a lot more. There's also a new one in the mix now, the Mahindra Alturas G4, which I will hopefully be driving very soon. But the Isuzu is purely about raw brute performance, that engine, and Musca suspension. I can't tell you how plush this ride is. The combination of the 17-inch alloys and a rather soft suspension setup, which is very highway friendly, not so friendly अगर आप low speeds पे मुंबई के back alleys में गाड़ी चला रहे हैं, because significant body height होने की वजह से there's a lot of body roll, a lot of vertical movement, which is understandable and expected from a tall SUV stance like this. जितनी गाड़ी squat होती है, low center of gravity होती है, body roll कम लगता है. But at high speeds, अगर आप जा रहे हैं थोड़े bumps के ऊपर या फिर छोटे से speed breakers के ऊपर, आपको literally लगता है कि आप जहाज में बैठे हैं. The one I'm driving is a 5-speed automatic. I would have liked a 6-speed automatic, but 5-speed is what you get. It's a nice no-nonsense gearbox. Gear shifts are nice and well spaced out.
There is of course an option to go manual with the gear knob. अगर आप उसे right shift कर देंगे, then you can just flick the gear lever up and down if you want to manually switch gears. अगर आपको कुछ extra maneuvers करने हैं highway पे or things like that. But for most part, it's responsive. आपको power चाहिए, you know, floor the pedal, and of course there's a turbo lag because it's a diesel 4-cylinder. But it catches on rather quickly. There's a lot of torque. There's about 174 bhp of power and 380 newton meters of torque. So it's a very torquey motor, and that you can feel throughout the rev range. Did you hear that? Yeah. It's not the most refined engine, and जो engine noise है, transmission noise है, that travels within the cabin. But you know what can help nullify that noise? I was pleasantly surprised how awesome the speakers sound. The speakers that are roof mounted here for second and third row, along with the AC vents, and the sound quality is Dasu. Lamborghini chalai jaane o, Lamborghini chalai jaane o, sanu vi chutta de do, kithe kalle kalle jai jaane o, sanu vi chutta de do, kithe kalle kalle jai jaane o, model down nich mare geedi, That bass! Not sure you can hear or feel the mad bass that I'm feeling. But you know, that brings me to the sorest point, सबसे weakest point जो Isuzu MU-X के cabin का है, वो है ये infotainment setup जो यहाँ दिया हुआ है. Now don't get me wrong, the entire dashboard, it looks beautiful. It's got a ton of storage. There's soft leather touch, जहाँ पे आमतौर पे बहुत ज़्यादा hard या cheap looking plastic होते हैं बाकी गाड़ियों में. So it's a well appointed cabin, but ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, ये ऐसे लग रहा है मतलब 2008 या 2010 की गाड़ी का है. एक तो आई रियली डोंट नो सीडी को यूज करता है क्या. चलो, इसमें डीवीडी सीडी प्लेयर दिया हुआ है. अर्लियर वर्जन में यहाँ पे 10 इंच का एक पॉप डाउन स्क्रीन हुआ करता था, वो अभी नहीं है, which is okay. But there's no smartphone integration, ना Android Auto, ना Apple CarPlay. There is no navigation. And जो टच स्क्रीन का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो मतलब it doesn't look like a very 2018-2019 का यूनिट. Of course, once you get the car, you can always replace it with a swanky looking whatever third party setup that you want. But अगर मैं 25 से 30 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, I expect this is a basic thing creature comfort के मामले में. Now Isuzu is not a brand जो आप बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाला ब्रांड जैसे टोयोटा की फॉर्च्यूनर या फोर्ड की एंडेवर. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. लोग 30-35 लाख रुपए खर्च करते हैं, फोर्ड की गाड़ी लेते हैं, और फिर कुछ और 10-15 हजार रुपए खर्च करके सामने वो बड़ा सा ग्रिल पे एलईडी लगाते हैं जिसमें फोर्ड लिखा हुआ होता है. बिकॉज इतनी एस्पिरेशनल वैल्यू है उस ब्रांड की कि लोगों को शो ऑफ करना है, स्क्रीम करना है कि हाँ भाई मेरे पास फोर्ड की गाड़ी है. Isuzu के मामले में वैसा नहीं है. इंडिया में Isuzu इज रिलेटिवली लेसर नोन. ऑफ कोर्स Isuzu की जो डी कैब है वो टाटा Xenon के साथ जो कमर्शियल स्पेस है वहां पे बहुत अच्छा कर रही है. एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट में अभी D-Max V-Cross कई सारे अवार्ड्स भी जीते थे उसने. सो दैट एक्चुअली वाज अ बिग थिंग फॉर देम. बट what most people don't know is how legendary Isuzu is as a Japanese car company, how legendary their machines are. And in fact, I was in Thailand a couple of weeks ago. Every house at least has one Isuzu pickup truck. Everybody. Okay? This is a company जो सिर्फ SUV बनाती है. So if anybody knows how to make SUVs, it's Isuzu.
And that really translates into the amount of power, into the beautiful suspension, into the amount of space that's carved out here. Third row में मैं जाके बैठ के देख रहा था. There's actually space enough, headroom, legroom enough for 2 adults to sit वहाँ पर. So it's beautiful. I would say for 6 people, this is a super spacious, roomy cabin. It's just that it doesn't have the chutzpah of other brands, you know what I'm saying? In terms of safety and security, it's packed from the number of airbags to ABS, EBD. There's of course traction control, there's hill descent control. It's got all those amazing electronics and mechanical features going for it that are required for a thoroughbred 4-wheel drive SUV. 4-wheel drive क्या, मैं तो मुश्किल से ड्राइव कर पा रहा हूँ यहाँ पे यार. मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खचाखच ट्रैफिक भरी हुई है. आई एम रियली वेटिंग टू ट्राई आउट महिंद्रा ऑल्टुरास, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कैबिन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, द ऑल्टुरास इज खचाखच पैक्ड. इट्स ऑफ कोर्स द SsangYong Rexton जिसे अडैप्ट किया है महिंद्रा ने, एंड इट्स फुल्ली पैक्ड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. सो I think as a comfortable feature-rich cabin, the Alturas would score extra points. It's also fairly more expensive compared to the MU-X. What do you think? In the comment section मुझे लिख के बताइए कि अगर आपके पास 25-30 लाख रुपए हैं and अगर आपको एक 4x4 6-7 सीटर capable SUV खरीदनी है, Isuzu MU-X, Toyota Fortuner, Ford Endeavour या Mahindra Alturas G4, इन चारों में से आपकी पिक कौन सी होने वाली है? एंड बिकॉज आई हैव barely spent 24 hours with the MU-X, verdict देना तो कोई दूर की बात है. आई एम happy that I got to try out the MU-X. It's a solid looking product, drives well, engine refinement में थोड़ी गुंजाइश है, एंड फीचर्स एंड गैजेट्स के मामले में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपने अब तक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. इसमें 2 किस्म के वीडियो बनाता हूँ मैं. एक तो गाड़ियों के साथ जो मैं आई ट्राई एंड ड्राइव देम, आई टेस्ट देम, एंड दूसरे किस्म के वीडियोस हैं जो tech2.com, जिसका मैं एडिटर हूँ, tech2.com के जो तमाम वीडियोस होते हैं, स्मार्टफोन रिव्यूज होते हैं, I bring those. So for all things gadgets and smartphones and science, you should head over to tech2.com, जहाँ पे तमाम लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज, व्यूज, ओपिनियंस, लिस्टिकल्स, ये सब मिल जाएगा आपको. We really put in a lot of effort, guys, so go check that out.